Is it raining? बारिश हो रही है भाई. Hey guys, so it's time for the third service of my bike. It's raining a lot here since morning. 9:30 was the appointment time. अभी 9 साढ़े 9 तो बज ही गए हैं. I'm slightly late. Slightly over. I mean almost like half an hour late. जी वहाँ जाने में भी आधा घंटा लगेगा. And then this time doing the servicing from Chopra Motors. So there is this like 3 major like service centers in Pune. One is the Done, other is Brahma Motors, and then there is this new, not new but yeah, comparatively new, Chopra Motors. And yeah, I got these new gloves from Rynox. I don't remember the name. I'll put it on the screen. The top part is mesh, and then combination of mesh and leather, and then it has a palm slider, the slider, and then the knuckle guard, all of that good stuff. So these are comfortable. I still need to spend some time getting used to these gloves. Maybe I'll put a feedback in one of my next rides then how these feels. But these, and also see this has this pinky finger protector as well. See if you can see this, it has this as well. So all the good stuff is there. So we have reached Chopra Motors, Wagholi. Let's see कैसे सर्विस करते हैं ये लोग. ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा. सर्विस एडवाइज़र लाइक थोड़ी देर में साइन हो गया, जॉब कार्ड वगैरह बन गया, एंड देन आई जस्ट स्पेंड सम टाइम देयर. बुलेट 650 दिखी मेरे को वहाँ पे न्यू, ब्लू कलर ही है. दिस ब्लू कलर इज लाइक battleship blue, I believe. So overall like bike, as you guys know, right, I mean ये classic 650 ही है. It's just that it is rebadged as bullet 650. बैजिंग चेंजेस है, हैंडल बार ये चेंज है. तो ये हैंडल बार देखो थोड़ा स्लाइटली अपराइट है, और ये मेरी क्लासिक के थोड़ा नीचे हैंडल बार है. और बाकी सीट इज द मेजर डिफरेंस. ये साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो क्लासिक सामने से देखोगे तो यू विल नॉट इवन फिगर आउट कि कौन सी बाइक कौन सी है. Girls just wanna have fun, yeah. Just wanna have fun. Girls just wanna have fun. Just wanna have fun. Girls just wanna have fun. I went home and came back around 6. मेरी बाइक फिर भी सर्विस नहीं हुई थी उस टाइम पे. इट वॉज स्टिल ऑन द रैम्प. ये लोग ऑयल चेंज कर रहे थे उस टाइम पे. दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ द ऑयल वाज. देन दे चेंज द ऑयल फिल्टर. सो दे हैव द सर्विस किट फॉर ईच बाइक, बट दे डिड नॉट हैड वन फॉर क्लासिक 650. सो इवेंचुअली एग्जिस्टिंग एयर फिल्टर को ही क्लीन करके हम लोगों ने यूज़ किया. फाइनली सर्विसिंग इज़ डन. बहुत लेट किया इन लोगों ने यार. सुबह मैंने 9:30 बजे 10 बजे दी थी शायद बाइक. अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:30 बज गए ऑलमोस्ट. बाइक फील्स अ बिट स्मूथर. थोड़ी सी तो स्मूथ लग रही है मेरे को पहले से. एक ही कपड़े से पूरी गाड़ी साफ़, सब सारी गाड़ियाँ साफ़ करते हैं यार. कितना गंदा है ये सब. तो सर्विसिंग का अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 3,500. और 3,500 में व्हाट इज़ इंक्लूडेड
oil change, oil filter is changed, and then consumables and air filter इन्होंने सिर्फ clean किया है, but they usually change the air filter as well. So क्या होता क्या है, there is this new like kit कुछ आ रहा है इन लोगों का, ऐसे सर्विस किट होता है, एंड सर्विस किट में आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक क्लासिक 650 का किट अवेलेबल नहीं था, सर्विस किट, तो दे लाइक चार्ज मी इंडिविजुअली, बट दिस इज़ व्हाट द कॉस्ट इज़ 3500. अगर वो किट होता तो इट वुड हैव कॉस्टेड मी लाइक अराउंड 4000. ओवरऑल सर्विस इज़ फाइन, थोड़ा सा लेट किया इन्होंने. अरे ग्लव्स में ये पिंकी फिंगर मेरा इस फिंगर के साथ लाइक जोड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, बिकॉज मैंने पहले कभी ऐसे ग्लव्स पहने ही नहीं जिसमें ये पिंकी फिंगर प्रोटेक्शन है अवेलेबल था. सो इट विल टेक लिटिल टाइम टू गेट यूज टू. बुलेट 650 का हैंडल बार इज स्लाइटली अपराइट और इसका थोड़ा नीचे है, ऑल्दो मीन दिस इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल, बट थोड़ा सा अगर ये ऊंचा होता तो लाइक और ऐसे रिलैक्स्ड लगता, मेरे को ऐसे लग रहा है. एक बार मैं बुलेट 350 का टेस्ट ड्राइव लेता हूँ एंड देन आई डिसाइड कि मेरे को उसका हैंडल बार इंस्टॉल कराना चाहिए कि नहीं ना. ऑफकोर्स बाकी टूरिंग सीट आई वॉज थिंकिंग कि चेंज करूँ, क्योंकि बिकॉज दे आर दिस सीट इज़ नॉट कम्फर्टेबल बियॉन्ड लाइक आई मीन 2 hours ऑफ राइडिंग. सो बट टूरिंग सीट इनके पास अवेलेबल थे ही नहीं. बोल रहे हैं कि ऑर्डर करना पड़ेगा, बट यार देखे भी ना ऑर्डर कैसे करूँ ना. आई नीड टू सी द सीट्स फर्स्ट, लाइक हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम दिस सीट. इफ़ यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़. मैंने काफ़ी लॉन्ग राइड्स भी किए एंड देन आई हैव टेकन दिस बाइक ऑफ रोड्स एज वेल. एंड देन इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी देयर आर अदर वीडियोज़, like I have converted my tires to tubeless, so there is a video for that as well. Go and watch that as well if you have questions. Thank you so much guys for supporting. See you guys in the next one. Thank you.